Good to see everyone early in the morning. Yeah, I'll be starting very soon now. Just a minute. Just a minute. My writing pad is giving me some trouble. Huh? Just a minute. Just a minute. Okay, we have it now. We have it on track. कर रहा हूँ बेटा, सब कर रहा हूँ. 2 मिनट खाली और राइटिंग पैड में प्रॉब्लम हो गया. All right. I need to know, can you hear me now? Join audio. And
Okay, then good to go. My writing pad was giving me trouble, so मेरे को लगा क्या हो गया ये early morning. Writing pad अभी तक खुला नहीं था. Maybe good morning बोला मैंने, then it went ahead. Okay. Then we will quickly go ahead with the standards. See, today the target is to finish off SA 505, 501, 510, 580. ये सब ना बेटा, all of these standards are normally your evidence-based standards. Okay. Just a minute. All right. So all of these standards are usually evidence-based standards. And evidence-based standards के लिए, yesterday I taught you some basic point. Here it is, point number 13 of SA Basics. Yes. Yesterday we had a discussion about this point, about normally in an evidence-based essay, how auditor is supposed to think. So mostly around this point only we are going to talk about stuff, and also audit opinion वगैरह का भी discussion आएगा. We'll quickly start with this. Essay 505. One of the very important essays for final CA, but usually अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, because at inter CA level also students इसको अच्छे से prepare करते हैं. But I just want to confirm कि आपके पास सब clarity है कि नहीं knowledge का when it comes to essay 505. Okay. So external confirmation definition. If at all they will ask external confirmation का definition, so we all know it is third party confirmation, but लिखना कैसे होता है वो diagram यहाँ पे पूरा दिया हुआ है. Just a minute. Okay. So the whole diagram you can see over here. No. That auditor is going to send a confirmation request to third party. Third party is going to give a direct written response to the auditor. And of course, that can be either in paper form, electronic form, or some other medium. Other medium usually तो होता नहीं है, paper form या email ही होता है. तो आजकल नए कुछ website portals भी बन रहे हैं for other medium, but we will not talk about all that currently. We want to clear the exams. So it is usually paper form or electronic form. All right. Okay. Now this bare essay का definition के लिए यहाँ पे diagram है. So that's not a problem at all. अच्छा, naturally ये confirmation request जब auditor भेजता है, तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है about management's authorization, because normally third party will not respond. Third party auditor को personally नहीं जाता, third party does not know the auditor personally, so third party will not respond unless it is authorized by the management. I will talk about it. I will talk about it in detail later on. Okay, but I hope that you are clear with this definition. So never forget this direct written response to the auditor from a third party confirming party in paper, electronic, or other medium. All right. Okay. We go ahead now. Very important discussion coming up. When auditor sends the confirmation request, I know that आपको ये point तो पता ही होगा, but मैं quickly आगे लेके जाता हूँ. When it's like ABCD जो आपने इंटर सी लेवल पे पढ़ा होगा. When auditor sends the confirmation request, there are two types of confirmation request. एक positive confirmation request, दूसरा negative confirmation request. Positive confirmation request means yes, देखो highlight करके दिया हुआ है. Okay. Positive confirmation request, whether confirming party agrees or disagrees. So you have to clearly tell me, auditor will tell confirming party that tell me whether you agree or disagree. मतलब आपका reply आना जरूरी है. It is compulsory for you to reply, because I will not conclude without your reply. So tell me whether you agree or disagree. Negative confirmation request only if confirming party disagrees. All right. So that is very clear over here, that you have to reply only if you disagree. You have done all this at inter C level, ज़्यादा और इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. तो बहुत जो लिखा है वही meaning है. अच्छा, but there is something that you should know. ये normally final stage students don't know about this. That if auditor confirmation request जो third party को भेजता है, this confirmation request दो चीजों के लिए होता है. एक, when you actually want to confirm something, or you just want to obtain some information. जैसे कि I'll tell to the lawyer that please give me this information. Of course, keeping management in the loop. So I just want to obtain some information. That's it. So let us say, if I tell you whether you agree or disagree, जवाब दो whether you agree or disagree. तो ठीक है.
पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. अगर मैं बोलूं कि हेलो रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री, रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री, तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. बट इफ आई टेल यू दैट हेलो जस्ट गिव मी दिस इंफॉर्मेशन, बस, तो कौन सा रिक्वेस्ट हुआ? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. इसका मतलब मैं अगर आपको बोलता हूं कि रिप्लाई ओनली इफ यू डिसएग्री, तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. बाकी और कोई टाइप का रिक्वेस्ट जाएगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में दो डेफिनेशन है. वन इज रिप्लाई वेदर यू अग्री और डिसएग्री, और जस्ट गिव मी दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज आई विल नीड अ रिप्लाई. जहां पे आपको थर्ड पार्टी का रिप्लाई कंपलसरी चाहिए, दैट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. ऑलराइट. नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, reply only if you disagree. I think all of us understands that negative confirmation request is little less convincing, because it is little less convincing, because अगर reply नहीं किया तो हम खुश हो जाएंगे that the third party has agreed, पर शायद उन्होंने आपका request देखा भी ना हो, maybe they have not read your request. So we understand that it is less convincing, and I am telling you that boss, reply only if you disagree. So normally in audit, negative confirmation request, we should use it, the frequency of using it should be as low as possible. So we should try for positive confirmation request. Negative confirmation request is used in rare circumstances. तो यहाँ पे लिखा है देखो, it should be used less frequently. And ये MCQ के लिए important हो सकता है. SA 505 gives 4 factors, 4 conditions, I will say, not only 4 factors, that if all of these conditions are satisfied, अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, only then we should go for a negative confirmation request. So SA 505 says that first please check whether these 4 conditions are satisfied or not. Only if these 4 conditions are satisfied, only then you go for negative confirmation request, because it is not that great evidence. Okay, so tell me, मैं ये 4 conditions आपको पढ़ा दूंगा, but with your common sense आपको क्या लगता है that in an ऐसी entity में, in such an entity where naturally the chances of error, fraud are less, yeah, let us say if it is not that critical amount, no, not that highly material amount, yeah, in such an entity जहाँ पे ऑडिटर का कंफर्ट डेवलप हो चुका है, पास्ट एक्सपीरियंस डेवलप हो चुका है, in such entities only we will use negative confirmation request, वो भी सिलेक्टेड चीजों की. तो दिस इज कॉमन सेंस. अब आपका जो कॉमन सेंस है वही हम देखेंगे कि मॉड्यूल लैंग्वेज में उसको कैसे लिखा है. अंडरस्टूड? सो देयर आर 4 कंडीशंस. मैंने देखो यहाँ पे कोड वर्ड दे दिया है रेड, ऑलराइट, बट वी विल अंडरस्टैंड द कंडीशंस लॉजिकली. एक ये तो ऑडिटर का हर एक डिसीजन इसके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, गड़बड़ होने का चांस, जिसके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया. So if risk of material misstatement is low, then naturally I will be more comfortable in sending negative confirmation request. But if risk of material misstatement is high, of course I should go for positive confirmation request. Okay. Then let us say if I'm auditing an entity, debtors का trade receivables का list है. There are 1000 debtors. बहुत बड़ा entity है. There are 1000 debtors का entries है वो listing में. Total receivables में 1000 debtors. In that case, there are too many items over here, and let us say अगर similar amounts के item है, not that huge amount. अगर चलो top 5 debtors, top 10 का तो मैं फिर भी जाऊँ positive confirmation request, but for all other debtors which are in the same range and stuff, I may go for a negative confirmation request. So look at this. A is for amounts. Too many similar items with lower amounts. Similar items को सिमिलर आइटम्स जब होता है ऐसा सिमिलर आइटम्स, तो उसको ऐसे बोलता है होमोजीनियस सिमिलर आइटम्स. ओके, आप सिमिलर आइटम्स लिखोगे चलेगा. देन मैं जब ऐसा बोलता हूं, आई विल से दिस इन हिंदी, अगर तेरी ना है तो ही जवाब देना, वरना तेरी चुप्पी में तेरी हार समझ लो. Reply only if it is a no, otherwise your silence will be your agreement. If I'm going to send such a proposal, then naturally my confidence level needs to be very high. My confidence level needs to be very high. That boss, at least मैं आपके फोन में ब्लॉक तो नहीं हूँ, normally as a personal note पे समझा. So naturally I should develop that comfort
that the third party is going to read such request. Third party is going to read such request. So I is for ignorance. Chances of ignorance are less. और इसको एकदम मॉड्यूल लैंग्वेज में लिखना हो तो third party will not disregard such request. So at least they will read the request. Okay. And naturally, I'm going to send negative confirmation only if मुझे already comfort होता है that सब कुछ बराबर ही है. Just that it's more like a formality. For example, if you are auditing a company जिसके 50 बैंक अकाउंट्स है, अलग अलग बैंक्स में वगैरह, और 2-3 छोटे अकाउंट्स है, some small accounts in some banks, and naturally 31st March को बैंक का स्टेटमेंट भी आता है. So you already have good enough evidence to verify the balances as on 31st March. So for some bank accounts of that company, I already have an external evidence. मुझे पता है कि इसमें difference नहीं होगा. So that is why I know that chances of disagreement are less, and I may go for a negative confirmation request. But let me remind you, इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर उल्टा हो जाता है, so let us say if risk of material misstatement is high or amount is very big, or you think that third party may ignore such request, or you think that chances of disagreement are high, if any of these condition is on the reverse side, you will have to go for positive confirmation request. Uska matlab kya hua? That for sending negative confirmation request, all of these conditions need to be satisfied. I hope I am clear with this. Be careful. All of these MCQ में आएगा तो all of these conditions should be satisfied. Okay, we go ahead now. Now, naturally, एक ऑडिटर को डिसीजन लेना होता है that yes, conditions are cumulative. Arun Rajgopal, thank you so much. All of these conditions, then it is fine. Karamjit Kaur, I explained it in much detail, all the conditions. I cannot keep on repeating. This is a fast track batch. So you can join the doubt solving session. बहुत slow गया ये सब conditions. All right. So now listen to this very carefully. ऑडिटर को सबसे पहले एक डिसीजन लेना होता है whether he actually wants to go for external confirmation or not. Yes. So based upon which factors auditor will decide कि हाँ इस entity में I will go for external confirmation. Okay, ये entity में external confirmation के लिए जाना safe है. Understood this? On which factors he is going to decide. आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है? या पूरा SF505 आप सर्च करोगे ना आपको नहीं मिलेगा. Because this question I have taken from ऐसे 330 वहां पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का डिस्कशन दिया है जो मैंने यहाँ पे पुश अप कर दिया. लुक एट दिस फैक्टर्स. अब आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो ये रहा, ये जो हेड पॉइंट है वही तो क्वेश्चन फॉर्म में आएगा. लुक एट फैक्टर्स दैट मे असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. दैट मींस मैं इसको परफॉर्म एक्चुअली करूं कि नहीं करूं व्हाइल परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स. दैट डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर्स. ये देखो थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग टाइप कोड है. देखो तो कोड वर्ड दिया आपको, नॉलेज, एबिलिटी एंड विलिंगनेस कैन अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. अगर आपके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, तो आप अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो. दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स कि हम याद कैसे रखेंगे. सो आई एम डन दिस आल्सो. अब थोड़ा ऑडिटर के एंगल से सोचो. थर्ड पार्टी के पास नॉलेज होना चाहिए फॉर द मैटर दैट आई एम आस्किंग, देन आई विल गो फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन. Third party should have the ability to provide the requested information. Third party should have the willingness also to respond, because sometimes fearing the legal problem or fearing the cost problem, time problem, they may not have the willingness to respond. Understood this? And then I should be satisfied that yes, मैं ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ उससे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो पर्पस है वो अचीव हो जाए. मैं क्लियर विद दिस? So these are the conditions. So I have already given the conditions और देखो इतने सारे एग्जांपल भी दे दिए हैं. ये थर्ड पार्टी के पास ये सब होना चाहिए, एंड मुझे भी बिलीव होना चाहिए that yes, this will be able to achieve the purpose. And one more thing, there is one more point, objectivity of the third party. That means third party should be unbiased also. Objective से दो पॉइंट है. एक तो ऑडिटर को भी बिलीव होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, एंड सेकंड इज थर्ड पार्टी का ऑब्जेक्टिविटी. थर्ड पार्टी शुड बी अनबायस्ड. फॉर एग्जांपल, अगर थर्ड पार्टी इज अ रिलेटेड पार्टी, इफ थर्ड पार्टी इज अ रिलेटेड पार्टी, then in that case मुझे पता है यार that this third party is influenced by the management. In that case I may not go for external confirmation, or I may not rely that much on external confirmation. All right, okay, we go ahead now. Examples of situation. क्या हो रहा है ना, ये मुझे एडमिन प्रॉब्लम्स पूछते हैं ना चैट में, तो प्रॉब्लम हो जाता है.
एक तो मैं चैट को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ ताकि मुझे पता चले डाउट्स है कि नहीं. अभी समवन इज टेलिंग मी सर क्लास मॉर्निंग में रखो प्लीज, फ्रेश रहेगा एंड दिस एंड दैट. मॉर्निंग में आप 5 आवर्स 6 आवर्स वगैरह देना पॉसिबल है. सो मेनी थिंग्स दैट गो ऑन. कोई बोलता है ये है वो है एंड स्टफ. I also have my schedules, so free classes, how much I can keep everything according to your wishes. थोड़ा यार आप प्लीज एडमिन चीजें यहाँ पे मत लिखो चैट में यार. Look at this. Examples of situation where external confirmation may provide relevant evidence. ये खाली नॉर्मल है बाबा, इंटरेस्ट ये लेवल, इवन इफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टडीड दिस, स्टिल दे कैन आंसर. तो इट इज जस्ट अबाउट गिविंग वेरियस एग्जांपल्स कि ये सारे एग्जांपल यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज हो सकता है. आप आर्टिकलशिप में हमेशा करते रहते हो ये सब चीजें. जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स, जितना भी बैलेंसेस वगैरह है सबके बारे में लिख दो. But let me tell you, external confirmation is not only for confirming, it is also to obtain some specific information. All right? Okay. फिर ऑडिटर को जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करना होता है उसकी प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? लुक एट दिस. जस्ट थिंक विद कॉमन सेंस. ओके, ये नोट्स है आपके पास, हर बार ना ऐसे नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहो. जस्ट थिंक विद कॉमन सेंस. एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर क्या होगी? फर्स्ट, ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन दैट एग्जैक्टली फॉर व्हिच इंफॉर्मेशन ही वांट्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन. Then he has to select third party. Then he has to select third party. Then what he is supposed to do? Then he has to write the confirmation request draft. Of course, it is being done in connection connection with the management, because management को authorization वगैरह सब देखना पड़ता है. We'll discuss about that. And then naturally he has to send the confirmation request. And then he will take the follow up. या तो reply आएगा या तो फिर reminder वगैरह we will send. तो यही देखो, ये पूरा उसका फ्लो बना के दिया है. 1 2 3 4. ऑलराइट, सो दिस इज द कंफर्मेशन प्रोसीजर. अब इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आइदर देयर कुड बी अ क्वेश्चन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर बताओ. जस्ट अ मिनट. ओके, आइदर देयर कुड बी अ क्वेश्चन that please tell us what is the external confirmation procedure, और इसके अंदर भी क्वेश्चन हो सकते हैं. The first thing, determining the information to be confirmed or requested, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है. So what can be that information? Exactly ऑडिटर नॉर्मली कौन सी चीजों के लिए कंफर्मेशन लेता है? इधर जो था वो खाली प्योर एग्जांपल्स, इधर थोड़ा कंसेप्ट है कि या तो हमें बैलेंस कंफर्म करना होता है या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंफर्म करने होते हैं. ये थोड़ा जनरल प्रिंसिपल्स टाइप है कि किसके लिए चाहिए होता है कंफर्मेशन. Either we want to confirm terms of transaction, or we want to confirm that okay, this is not there in your terms, absence of certain conditions. So this is more like broad points that for which auditor obtains external confirmation. तो अगर ये आया एग्जाम में तो थोड़ा ऐसे लिखना, और उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो you can add these examples also. It's fine. All right. Okay. Then next, auditor has to select the party. That will depend. I will go for the parties which are unbiased. Which cannot be influenced by the management. 100% तो उसका कोई evidence नहीं मिल सकता that the party is unbiased. But naturally, related party and stuff, I will not prefer much for external confirmation. Okay. Then, designing the confirmation request. One of the most frequent questions that can be asked. Designing the confirmation request, be very careful. So auditor जो confirmation request design करता है, either auditor will design it on his own, or he will ask management to send this confirmation request to third party. Of course, contents पूरा मैं finalize करूँ. Rest of this. So formality होता है whether it is going from the auditor or from the management, but response has to come directly to the auditor. Response has to come directly to the auditor. But जब auditor ये confirmation request design करता है, that to third party and stuff, जब confirmation request design करता है, at that point of time what are the factors to be considered? अभी आपके पास ये notes है, पर आप थोड़ा common sense से सोचो that जब मैं लिख रहा हूँ confirmation request, तो what are the factors that I will consider? पहले common sense. Naturally मेरा format, layout, presentation कैसा होना चाहिए? Just think like that. Then अच्छा मैं क्या लिखूंगा, what I will write will depend upon the nature of the matter that I want to confirm. Understood this? What I will write, that will depend upon the nature of the matter.
Okay. Then what is the risk involved? If risk is high, I may have to write in more detail. I may have to go for positive confirmation. Okay, so what is the risk involved? Arey, whether third party reply karega nahi karega, let me take stamp of the management's authorization. Acha, I have to write it in such words that third party will reply. So the third party should have the ability to provide the requested information. It's a basic common, and then past experience of the auditor, professional judgment of the auditor. ये सब तो common points हैं. So past experience, professional judgment, these points keep on coming in almost all the answers. So जब भी आपको factors का question आता है, be careful कि ये decision आप कौन से factors पे लोगे, based upon which points will you decide that how you are going to do this. Then in that case, there are few common points. You know, auditor's professional judgment, materiality of the item, ROMM, risk of material misstatement. ये सब common points आते रहते हैं because इसके ऊपर पूरा audit dependent. Apart from this, the best tip to score in exam is that जितने भी factors वाले question हैं, for those questions आपको दो at least 2 unique points याद रखने हैं, बाकी के points you write on your own. This will ensure that you score at least 50% of the marks. If you write more unique points, you will score more marks. But दो तो unique point मिलने चाहिए. For example, अगर आप देखोगे, तो अगर ये question है, अभी past experience of the auditor ये almost हर एक answer में होता है. But if you talk about this management's authorization, very unique point. Very unique point. ये एकदम ये आंसर के लिए बना हुआ पॉइंट है, management's authorization. Then we talk about this layout and presentation method is being made for this answer. फिर मैं प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करूंगा? Of course, it will depend upon the assertions being addressed. Assertions मैंने बोला था कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन बैलेंस या डिस्क्लोजर के लिए ले रहे हो. For which TBD you are taking the confirmation. Now, for based upon that, we are going to also decide. अरे बाबा, risk of material misstatement decides whole audit. पूरा audit risk of material misstatement decide करता है. If risk of material misstatement is high, I may have to write in detail exactly what information I want. I'll have to be very careful about the confirmation request. And then this is also a unique point. That boss, whether third party will be able to provide me that requested information or not, ability of third party to provide the requested information. So boss, मैंने आपको code दे दिया है. सोचो कि our next PM का name is Kalra. So if any Kalra surname is sitting over here, that's fine. So PM Kalra. Okay. That is the code word. You can remember this communication method. You know, whether you want to send it in paper form, electronic form, email and stuff. All right. So these are the points. But एक बड़ा point है जो यहाँ पे है. That is management's authorization. So on this, I will need management signature, or I will ask management itself to communicate my content to third party. So जब ये बात आती है तो उससे पूरा एक नया चार्ट बन जाता है. You see there are 2 asterisk marks over here. Those asterisk mark I'm continuing over here. That boss, what if management refuses to authorize a confirmation request? जब भी management कोई चीज के लिए ना बोलेगा, then we'll see whether there are valid reasons, invalid reasons. Valid reasons can be, example, legal dispute with third party. जो वैलिड नहीं हो फिर इनवैलिड रीजंस. अगर वैलिड रीजंस है, if there is a legal dispute going on in third party, तो legal dispute में हम बीच में नहीं आ सकते. Then we perform alternate procedures, जैसे आपका ledger scrutiny वगैरह हो गया. ये कल के बेसिक्स में से ही है. ये आपका this is auditor's normal thinking. Okay. इसके बाद भी अगर evidence नहीं मिला, then we'll modify the opinion. And hello, wake up. After performing alternate procedures also, if evidence is not available, then this is limitation on scope of audit due to circumstances. Okay, we'll modify opinion as per SS 705. Which opinion? Tell me. Evidence nahi mila hai. Evidence nahi mila hai. Which opinion? Tell me. Yes. Qualified adverse disclaimer QAD जो भी type करना है करो. Which opinion? Tell me. In the chat box. Yes. Very good. The adverse तो बेटा आएगा नहीं. Evidence is not available. Yes, most of the students have gone wrong. Sorry, gone right. Sorry. It is qualified or disclaimer.
because we don't know exactly यहाँ पे किसकी बातें चल रही है, which evidence you are not getting it. Okay, fine, that's it. Thank you. So qualified or disclaimer, we discussed about this in lot of details yesterday. All right. थोड़ा टाइम लगा रिप्लाई आने में, सो रहे ऐसा. So if there are invalid reasons, naturally I will discuss the matter with those charged with governance. If the matter is still not resolved, this is limitation or scope of audit being imposed by them. And also I'll modify the opinion, qualified or disclaimer. Here, so you can write about withdraw from the engagement also if it is permissible. Okay. But naturally याद रखना, जब invalid reasons हो तो एक और point लिखना है, that which is specific over here, that consider risk of fraud in the financial statements, because they're not allowing you to communicate with third party. So this is the chart. Many times this case study has been asked in exams at interest and financial level. So be careful about it. Okay. External confirmation procedure हो जाने के बाद, we are now talking about results of external confirmation procedure. We are at the end stage. So what are the results of external confirmation procedure? All of these can be examination question. Heading आपको मैंने last time बताया कि जो heading है that can be an examination question. अब ये पूरा flow chart एकदम style से दिया गया है. So I am giving you 2 minutes. 2 minutes भी नहीं, 1 minute और 2 minute the maximum. एक बार आप देख लो, फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ. This flow chart. फ्रॉड के केसेस में कारो 14312 वगैरह वो सब I will discuss in company audit. Don't talk about all that right now. Arjun, I'm very happy that you are remembering. But अभी mix मत करो, otherwise there will be no limit. Please go through this chart very quickly. Okay, I will discuss this now. Yeah. I'll discuss this. Results of external confirmation procedure, very simple, whether you have sent a positive request, negative request. If you have sent positive request, response received. First, we'll talk only about positive request. That is the trick of learning the chart. First, focus only on one side. Positive request में क्या बोला था? Whether you agree or disagree, या तो give me this information. So I was waiting for the reply of third party. So response received or no response. Okay. If the response is received, then naturally I have to evaluate the reliability of the response. That we will discuss about it, reliability of the response. But अगर response नहीं आया, if the response is not received, then naturally positive confirmation request बोला response नहीं आया, तो भी मैं क्या करूँ? I have not got the evidence from third party, but fine, I'll try to perform some alternate evidence. I'll try to perform some alternate procedures. Okay, but I have to ask myself. यहाँ पे this is very unique discussion. This one, as per SA 505, I have to ask myself that boss, क्या really is there any alternate evidence that will satisfy me? Now, there could be some situations like a debtor of very high amount. Let us say that there is a debtor of the company जो 80% of the turnover company का लेके जाता है. Although I may have alternate evidence with me, but I want this debtor to respond at any cost. अरे boss, this is very big amount. या secondly, let us say मैं going concern confirm करने के लिए, some entity ने बोला है that they have appointed some investors. I mean, they are in talk with some investors. तो मुझे वो investors से बात करनी है whether they are going to invest this amount, because if they are not going to invest this amount, तो इनका going concern खतरे में है. So boss, there are some situations where you want the reply means you want the reply. आपकी life में भी तो ये होता है. I need a response. Means I need a response. और अगर जवाब नहीं आया, तो मुझे नहीं चाहिए.
So boss, if there is no response, auditor has to ask himself, is there any alternate evidence that is possible? If the answer is no, that means you need a reply, means you need a reply. Very rare situations, huh? Very rare situations. In that case, you will modify opinion as per SA 705. Of course, evidence nahi mila, so it could be either qualified or disclaimer. This part, have you understood? This part, have you understood? Thumbs up. All right, that's it. अगर अल्टरनेट एविडेंस पॉसिबल है तो अपना नॉर्मल स्टोरी परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, और ये सब तो आपको कल ही कराया मैंने, बेसिक्स आ रहे हैं. दैट इफ एविडेंस इज स्टिल नॉट अवेलेबल देन वी विल मॉडिफाई द ओपिनियन. ऑलराइट, सो बी केयरफुल अबाउट इट. अच्छा, व्हाई क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर? बेटा, देन यू हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडेज लेक्चर. इन दैट केस तो इट विल बी अ बिग. ओके, अब इसकी बात करते हैं. पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, रिस्पांस रिसीव्ड. if response is received, we evaluate the reliability of the response. Then we check whether the response is reliable or not. Acha, how do we say response is reliable? Wait, but let us say if response is reliable, mujhe jawab aaya and it is reliable also. Jawab, only receiving reply is not important, it should be a reliable response. If the response is reliable, अब मैं I will consider this as a good evidence. अब मैं check करूंगा with the books of accounts कि whether it agrees or not. So is there any disagreement? That I'm going to check. If there is no disagreement, fine, close the matter, everything is over. Okay, response reliable है. And if there is a disagreement, अभी books of accounts के साथ tally किया, but there is a disagreement, and response is also reliable, but books of accounts के साथ tally किया, there is a disagreement. That means there is something suspicious. Will perform. कल बताया था basics में that if कोई inconsistency मिलती है, point number 13 में बताया था, then perform additional audit procedures to identify कि whether there is a misstatement or not. So ये auditor का line of thinking होता है. All right. If the response is not reliable, if the response is not reliable, then in that case I will consider it as a no response. फिर ये no response वाले chart से connect हो जाए. All right, I am done with positive confirmation request. अरे reliability का बताता हूँ. See, I think करमजीत आप सुन नहीं रहे हो. मैंने बोला कि reliability का एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ कि how to evaluate reliability of response. Okay, but it's okay, आप doubt पूछते रहो. Negative confirmation request. Negative confirmation request अगर मैंने भेजा, that reply only if you disagree. So response received, no response. मैंने बोला था reply only if you disagree. If there is no response, at least I will consider there is no disagreement with the records of the client. Of course, आप ये मत बोलना that negative confirmation request हम तभी भेजते when we are when no risk is low and the amount is low and stuff. तो वो तो आपको पहले बता दिया, so don't worry about it. But let us say if the response is received, I told them that reply only if you disagree. If the response is received, then naturally I have to evaluate the reliability of the response. How to evaluate reliability? Wait. Whether it is reliable response, not reliable. If it is not reliable, I'll perform some alternate procedure because it cannot be considered as a response. However, if it is a reliable response, I told them reply only if you disagree. And if it is a reliable response, that means there is some kind of disagreement with the records of the client. That means there is some kind of exception. Disagreement यानी SA 505 उसको exception word बोलता है. In that case, I'll have to perform additional procedures to identify whether there is a misstatement or not. All right. So be careful about it. Now the question comes that boss, कोई भी situation में whether it is positive or negative, जब reply आता है, तो सबसे पहला point है that we have to evaluate the reliability of response. Here, Karamji, that how do we evaluate the reliability of the response? That boss, naturally it should come directly to me. Then it should not be a very delayed response. अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने कंटिन्यूअसली इंटरफियर किया है इन द रिस्पांस. सो नेचुरली दिस इज कॉमन सेंस. बेस्ड अपॉन व्हिच फैक्टर्स डू यू, फैक्टर्स वाला क्वेश्चन होगा ना, उसमें आप क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझोगे ना. इफ यू स्पेंड सम मोर टाइम विद द क्वेश्चन, पॉइंट्स अपने आप आएंगे. फैक्टर्स दैट मे क्रिएट डाउट. अच्छा, बेस्ड अपॉन व्हिच फैक्टर्स आपका डाउट क्रिएट होगा. बिकॉज़ इफ इट कम्स टू मी इनडायरेक्टली, इफ इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस, ऐसा no, it is not looking like as if it has come from the third party जिससे मुझे response चाहिए था. Okay, that was अगर unreliable response है, then naturally it is like a no response for me.
And if the response is not reliable, agar management ka interference वगैरह, if the response is not reliable, then in that case risk of material misstatement will be high. I may have to perform more procedures. देखो जब भी कोई गड़बड़ मिलती है ना, हमेशा ये पॉइंट तो होगा ही होगा that boss risk could be high and we'll have to perform more procedures. So these are the two main factors based upon which we decide the reliability of the response. Okay. देखो आपने अगर ये पूरा चार्ट देखा, ये पूरा चार्ट, तो इसका समरी which can be asked in exam, ये आपको पता है मैंने ये पूरा चार्ट क्यों करवाया? Why I have done this whole chart just to put these 4 points in your mind, which are actually given in the standards. They have not given chart in the standards. They have given these 4 points. So basically, results of SAGEL पूछ रही है, can alternate procedures and additional procedures be used interchangeably? No. मैंने alternate और additional के बीच का difference कल समझाया था basics में. All right. So I cannot keep on repeating. You can join doubt solving session. Okay. Now, following categories of results are possible. ये होता है जब आप basics ठीक से नहीं बैठते हो ना तभी. Following categories of results are possible. Previous chart से 4 category के result मिले. एक, a response, या तो response आया but there is a let us say agreement, या तो response आया but there is not an agreement, या तो response ही नहीं आया, या तो the response is not reliable. Understood? यही हो सकता है और क्या हो सकता है? A response has come from the confirming party, there is an agreement, or they have given the requested information. A response is unreliable, or there is no response, or there is a response indicating an exception. All right, so be careful about it. Adverse opinion can be given. Aneri, please ask me this in doubt solving session. I think you are thinking too much. अगर आप ये ओपिनियन का डिस्कशन खाली कल का जो मेरा चार्ट है ना उसको सिर्फ आप दिमाग में बिठा के रखो ना, लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा when it comes to forming an opinion. Okay, so these are the 4 categories of results that are possible. Are you clear with these 4 categories of results? Are your previous chart का summary था? Either there is a response received agreement, okay, or there is no response, or it is unreliable response, or या तो response आया but there is disagreement. Response indicating exception. Madam, exception यानी कि agreement नहीं है, books of accounts के साथ agree नहीं है, that is exception. आप अगर ठीक से notes देखोगे ना मैडम तो कोई problem होगा नहीं. Disagreement बोला, disagreement, exception. Okay, I'm going ahead now. I think थोड़ा नींद में बच्चे. Now look at this. If a confirming party uses a third party to coordinate, let us say confirming party जो है, ये बहुत अंदर से निकाला है क्वेश्चन मैंने. Confirming party जो है, it is using a third party to coordinate with us. And in confirming party has given responsibility to some third party to coordinate with us. If a confirming party uses third party to coordinate and provide responses to confirmation request, so in that case naturally थोड़ी extra चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. That boss, I'll have to be very careful कि जहां से reply आ रहा है, whether that person itself is authorized or not. Let us say मैंने कोई manager level या director level को confirmation request भेजा and they are giving that authority to some junior employee level or so. I'll have to see whether that person itself is authorized or not. फिर जो मुझे आ रहा है request बीच में कहीं पे manipulate तो नहीं हो रहा है. Integrity of the transmission. So it should not get manipulated. It should not get manipulated. And then response should come from proper intended source. So ATS, anti-terrorism squad, be careful about it. The respondent should be authorized. Transmission जो रहा है यानी जो send कर रहा है, transfer जो रहा है, it is जो reply आ रहा है, that should be integrity. That should have the integrity, means it should be proper and it should come from proper source. I hope you are clear with this now. So these are the only possible questions. इसके beyond आ ही नहीं सकता. The questions from SA 505. और अगर आप एकदम कॉन्फिडेंस में बैठे थे कि ऐसे 505 आपको पूरा आता है, then I hope that you would have seen some points, which are new for you also. Okay, so it's good to have confidence, but ऐसे 505 में problem ये होता है that students have overconfidence in such standards. All right, we go ahead now with our discussion. ऐसे 501, 505 is over. We are going with 501 now. Okay, 501 में ना introduction is very important. That was 501 deals with audit evidence. Okay, but किसके लिए?
specific considerations for selected items. Some specific considerations to be given for some selected items. So it is dealing with selected items. अब ये देखो, ये selected items. It is dealing with ILS, inventory, litigation and claims, and segment information. Be very fast with this now. Okay. But आपको एक और चीज समझना जरूरी. इन्वेंट्री में तो काफी सारी चीजें होती है. हम we verify existence of inventory, valuation, rights and obligation, disclosure. So इतनी सारी चीजें हम verify करते हैं ना when it comes to inventory. तो over here ये किसके साथ बेसिकली डील करता है? It deals only with existence and condition of inventory. Sorry. यानी कि जो स्टॉक ऑडिट होता है ईयर एंड पे, फिजिकल वेरिफिकेशन, सिर्फ उसके साथ ही डील करता है. देन लिटिगेशन एंड क्लेम्स. बेटा क्लेम्स यानी जब कोई डिस्प्यूट होता है तो वो क्लेम में आएगा. जब वही डिस्प्यूट कोर्ट में लेके जाते हैं तो लिटिगेशन हो गया. दैट इज व्हाई ऐसा होता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स. आपको पता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स में तो कितनी सारी चीजें होती है. व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ दैट लिटिगेशन एंड क्लेम्स, अच्छा उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखना है, वेदर चांसेस ऑफ लूजिंग आर मोर तो क्या प्रोविजन क्रिएट करना है. बट दिस एसे इज नॉट डीलिंग विद ऑल ऑफ दैट. प्रॉब्लम क्या होता है, इफ आई टेल यू अबाउट लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में लिखो एज पर एसे 501, फाइनल से स्टूडेंट्स के दिमाग में इतना कुछ चलता है फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम्स, दे कीप ऑन वॉमिटिंग एवरीथिंग. बट नो, दिस एसे जस्ट डील्स विद कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स. कंप्लीटनेस यानी कि हमको सिर्फ डेटा लेके आना है. We just need to identify litigation and claims. Litigation and claims के एनालिसिस के बारे में ये ऐसे है ही नहीं. This essay is not about analyzing litigation and claims. And then presentation and disclosure of segment information. Segment information के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो, AS 17 और Ind AS 108. So it is just dealing with that. इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है segment information. All right. Part 1 is very important for final CA. How to obtain sufficient and appropriate audit evidence for verifying existence and condition of inventory. Of course, when inventory is material to the financial statements. So this essay is just dealing with that. Be very careful. Naturally, year end पे जो stock audit करना होता है उसके बारे में. Practical life year end stock audit, many people know about it. I am just discussing what can be asked in exams. Auditor needs to attend the physical counting of inventory by the management. ये लाइन बाय हार्ट कर लो. डू नॉट मेस अप विद दिस लाइन. आपको बोलता हूं क्यों. I'll tell you why. स्टूडेंट्स कैसा कैसा लिखते हैं. ऑडिटर नीड्स टू, ये नहीं लिखना है. ऑडिटर नीड्स टू काउंट इन्वेंटरी. हैं ऑडिटर काउंट सर, बट हम तो आर्टिकल्स सिर्फ चाहते तो भी काउंट इट. अरे वो टेस्ट काउंट होता है. प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ काउंटिंग इज ऑफ द मैनेजमेंट. So be very careful about this. This is wrong language. This is wrong set of words. Auditor needs to attend the physical counting of inventory by the management. So counting is done by the management. We attend और थोड़ा बहुत test count करते हुए दिखाता हूँ. Such procedure, ideal situation क्या है? That such procedure ideally should be performed as on the year end date. That is the date of financial statements, of course. Okay. Now it is better to perform such procedure at the year end date, but कभी कभी exact year end date नहीं होता है, somewhere आगे पीछे होता है. We'll discuss about that also. Now exactly जब आप जाते हो for physical verification of inventory, which management is going to count and we go mostly there as an observer, तो आपको क्या procedure perform करनी है? This is the theory question that can be asked. What is the procedure to be performed when auditor goes for this physical verification of inventory, when he attends the counting of such inventory? तो आपको मैंने देखो कोड वर्ड बना के दे दिया ई टॉपिक. अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है, दैट मेनी स्टूडेंट्स हैव आइडिया अबाउट स्टॉक ऑडिट, सो दे जस्ट कीप ऑन राइटिंग ऑन देयर ओन. ऐसा नहीं करना है. ये क्वेश्चन वगैरह के लिए इंस्टीट्यूट इज लिटिल बिट सेंटी. एंश्योर दैट आप ये प्रोसीजर्स को फॉलो, आई मीन यू राइट दीस प्रोसीजर्स. सो आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन द प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरली वी आर वरीड कि मैनेजमेंट जो वहां पे एसी ऑफिस में बैठा है, हाउ दे आर काउंटिंग द इन्वेंटरी, how they are ensuring कि जो भी ground level पे हो रहा है that is correct. So we are worried about evaluating. E for evaluating. Evaluating what? Management's instructions and procedures. How they are ensuring that ground level पे inventory count सही तरीके से हो रहा है, because there could be 50 go downs also. Then T, test counts. Example दे दिया मैंने. Management instructions and procedures.
T for test counts. Naturally, we are also going to count, on sample basis. O for observation. P for performing checks. Checks over what? Final inventory records versus actual inventory count results. Of course, we are worried if final inventory records versus actual inventory count results, whether वो tally हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay. Then I for inspecting the inventory. Why do we want to inspect the inventory? Of course, to test the condition. इसमें you normally कभी-कभी expert की help लगती है. Inspect the inventory. And then, this could be a separate MCQ question also. That if the inventory is held with third party, in that case, अगर वो material है, so I can go for only confirmation from third party. But अगर बहुत ज़्यादा material है, I may also decide to visit over there. So it is either confirmation or inspection or both. बोलो, either confirmation or inspection or both. It is up to the auditor. Look at this: confirmation with third party or inspection or both, based upon materiality of inventory. I may also use the report of another auditor which is there with the third party. It is okay, but that is fine. वो तो हम वैसे भी discuss करने वाले हैं अभी तक. So ये e-topic ये कभी मत भूलना. These are the procedures to be performed by the auditor for attending the physical inventory count which has been arranged by the management. ये theory question. अब अलग-अलग case studies क्या आ सकते हैं over here? और ये कंटिन्यू हो रहा है, इन्वेंटरी कंटिन्यू हो रहा है. देखो यहाँ पे लिखा ना, various possibilities. Now look at this. If physical inventory counting is conducted at a date other than, जल्दी लिखो, the date of financial statements. Other than the date of financial statements, यानी कि exactly year and date पे नहीं हो पाया, other than the date of financial statements पे हो रहा है. एक तो ये possibility है. Let us say 25th March को हो रहा है instead of 31st March ऐसा. या तो ये possibility है. या तो let us say that जैसे decide किया था everything is going as per the plan. However, end moment पे, at the end moment, auditor is unable to attend. So management is going to count the inventory. Management is going to count the inventory, but auditor is unable to attend the inventory count. Then what to do? या तो let us say complete lockdown, go down and everything lockdown. Attendance at physical inventory counting is impracticable. Impossible मत लिखना, impracticable. Impracticable. Okay. Now let us say for एक situation में जाते हैं. First situation, 25th March को inventory counting हुआ. Third case पे आने तो बेटा बाद में बता दो. First situation, 25th March को inventory counting decide हुआ है. 31st March it is not possible. So 25th March, that is the date that has been mutually decided. So 25th March is just an alternate date. 25th March को मैं करूंगा तो e-topic. Then on 25th March, of course, I am going to do e-topic only. Okay. But additionally, one more point, जिस सिर्फ एक point add होता है. That boss, I will be worried कि 25th March से लेके 31st March जो भी movement हुआ inventory का, I would like to reconcile it. So that is what is given over here कि अगर ऐसा case study आया तो e-topic तो लिखो ही लिखो, plus reconciliation for changes between count date and the date of financial statements. That will also be written. All right. Okay. So this is the answer. E-topic plus reconciliation for changes between from the count date till the date of financial statements. Second possibility. Everything is going as per the plan, but at the end moment, because of some unavoidable situations, article lose motion. Because of some unavoidable situation, auditor is unable to attend. All right. If auditor is unable to attend, if audit, ये बेटा ये 25th March cut off ही तो है ना. All right. 25th March cut off है, पर वो आपको 25th से 31st का आपको reconciliation तो देखना पड़ेगा. All right. Second situation. Now second situation. Auditor is unable to attend. Everything is going as per the plan. Auditor is unable to attend. Now management ने तो कर लिया inventory counting, अभी वापस they will not just keep waiting for you. Then naturally auditor will visit on some alternate dates, perform some test counts, वो सब करेगा. But auditor will be worried कि जब मैं नहीं आ पाया, when I was not able to visit, whether management has done that counting properly or not.
then वो counting के records auditor will verify. So basically here you have to give examples of alternate audit procedures. और जो इंस्टीट्यूट का एग्जांपल्स जो मैंने दे दिए, some physical accounts on an alternate date, perform some alternate procedures on the transactions, reconciliation वगैरह. बट ये देखो तो जरा, what is WR? WR is nothing but, ऊपर लिख रहा हूं जगह नहीं है इसलिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एट फाइनल सी लेवल सबको पता है, जो मैनेजमेंट से हम डिक्लेरेशन लिखवा के लेते हैं एज पर एसए 580. सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लिखवा के ले लो, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा के ले लो. आई विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन एसए 580, डोंट वरी. मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा के ले लो, दैट वाज यू नीड टू बी राइटिंग दैट यू हैव परफॉर्म्ड all the procedures which were supposed to be performed. All right, so that is a return representation that we have to ask them, and कुछ differences है, then you have given it to us. आप समझना, फर्स्ट केस में alternate date था, alternate date, but procedure तो वही था. It was although an alternate date, but the procedure we performed was as per SA 501. But in the second case, since we were not able to attend, we have to perform a complete set of alternate audit procedures. ये कैसा केस है, मैनेजमेंट ने कर लिया है and we were not able to attend. Third case, nothing is possible. That was physical counting is not possible by the management, which I think last year काफी लोगों ने face किया when lockdown वगैरह हुआ था. This year also we are in the same situation. But last year it was a clear lockdown and across the country, all video conferencing and this and that was done. But आप वो सब लिखना start मत कर देना, don't start writing. If attendance at physical inventory counting is impracticable, audit language में कैसे लिखना है? Perform alternate procedures, give them some examples, verify previous records, ledger scrutiny, reconciliation अब तक का करो. अच्छा, reading reports of other auditor, let us say company का internal auditor या some other auditor has visited, so you can take their reports also. All right. Naturally, अगर company is not cooperating at all, या even after performing alternate procedures उनके पास records ही नहीं है, so although my heart breaks over here, but still I will have to say, modify opinion as per SA 705. अगर ये सब करने के बाद भी डेटा नहीं मिला, तो either qualified or disclaimer, या तो मिला but you are not satisfied with that data, neither qualified or disclaimer. यहाँ पे काफी बच्चे मुझसे disagree करते हैं, but this is what is written in their essay also. काफी बार क्या होता है पता है, इमोशनल क्वेश्चन होता है that auditor is not able to attend, management, अच्छा auditor is not able to attend, management is not able to conduct because of n number of situations, riot हो गया, ये हो गया. बट मैंने अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ट्राई की, बट इवन इफ दोस अल्टरनेट प्रोसीजर्स आर आल्सो नॉट गिविंग मी द एविडेंस, तो मुझे तो फिर फाइनली ओपिनियन मॉडिफाई करना ही पड़ेगा. आई विल नॉट से दैट अले मेरा बच्चा मैनेजमेंट, अले लॉकडाउन हो गया, अले चो चौली, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दैट. एटलीस्ट मुझे अल्टरनेट प्रोसीजर्स तो दो, कुछ तो मेरे लिए ऐसा क्रिएट करो फॉर व्हिच आई कैन से दैट ओके बॉस, आई हैव नाउ ऑब्टेन्ड द रिक्वायर्ड एविडेंस. इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट कोऑपरेशन, आई विल हैव टू मॉडिफाई द ओपिनियन. ऑलराइट, सो बी केयरफुल over here. So these are the 3 case studies. ये अलग-अलग case study के रूप में आ सकता है. In fact, this chart, all of these case studies have been extremely important for final CA level. So be careful about it. Okay. अगर मैनेजमेंट काउंट कर पाया लेकिन ऑडिटर नहीं कर पाया, तो बेटा वो सेकंड केस में आएगा. वही तो बता रहा था मैं. थर्ड केस is where it is impracticable. All right. Be careful. ओके, एक ऐसा थियरी क्वेश्चन आ सकता है. देयर कैन बी वन थियरी क्वेश्चन दैट, थोड़ा रिवाइंड कर लो, थोड़ा खुद को रिवाइंड कर लो. दैट वाज व्हेन वी आर गोइंग फॉर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग. व्हेन वी आर गोइंग फॉर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, ऑडिट टीम का वगैरह प्लान करना पड़ता है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग द काउंट ऑफ इन्वेंटरी? प्लानिंग थोड़ा रिवाइंड कर लो, अभी तक काउंट के लिए गए नहीं है. वी आर गोइंग टू प्लान अबाउट द काउंट. And what are the factors to be considered? Very simple यार, आपको कोड वर्ड बना के दे दिया. ये तो बाय हार्ट करने वाली चीज है, मतलब कॉमन सेंस से भी हो जाएगा. सोचो ना, काउंटिंग के लिए जाना, अच्छा कहाँ जाना है, लोकेशन, अच्छा इट विल डिपेंड अपॉन वेयर इन्वेंटरी इज मोर. अच्छा एक्सपर्ट चाहिए क्या, अच्छा इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन टू द टीम, अच्छा मैनेजमेंट ने अरेंजमेंट किया है कि नहीं किया. सोचो ना, इन्वेंटरी काउंट के लिए जाना है, पहले नॉर्मली फैक्टर्स आ रहे हो तो दिमाग में रखो. देन ऑफ कोर्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर, वो तो अभी हर एक जगह रहेगा ही. An auditor's professional judgment.
अच्छा, कितने टाइप ऑफ इन्वेंट्री है, व्हाट इज नेचर ऑफ इन्वेंट्री, we'll have to think about safety of my articles also, then work in progress. तो आप नॉर्मली भी सोचोगे ना तो 5-6 पॉइंट्स आपके दिमाग में तो आएंगे, बट एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इफ यू वांट टू राइट, देन आई हैव गिवन द कोड वर्ड, and as you can see, it is very clear, very clear. So I'm not going more into explaining every single line over here. Okay, so ensure that you remember this theory question. ये question ये आएगा, matters relevant in planning attendance. Planning बोला तो execution के बारे में लिख के मत आना ऊपर का, planning attendance at physical inventory count. Okay, so that is it for part 1, that is inventory. We are now going for part 2, sufficient appropriate audit evidence for verifying completeness of litigation and claims. I told you litigation and claims का completeness देखना है. When I say completeness means I just need to identify the litigation and claims. That's it. मुझे सिर्फ इतनी procedures perform करनी है जिससे I am able to identify कि what are the litigation and claims involving the entity. So it is very simple. इसलिए मैंने इसका कोड वर्ड बना के दे दिया. I am through litigation and claims entity में कौन से. So first I have to conduct inquiry of the management, inquiry of internal legal department if there is, inquiring the entities about entities in-house legal counsel. M will be, of course, you can inquire from the management also, but you need to also read the minutes of meeting. जो भी है mostly ये सब data minutes of meeting वगैरह में होता है, तो आप बहुत simple है ये सब चीजें. Then of course C for what is the communication between entity and its external legal counsel. Entity और उसके external lawyers के बीच का क्या communication है, I'll just read that so that I'll come to know. देखो आपको litigation and claims का data निकालना है तो कहाँ से निकालोगे, सोचो. And this is the big technique done by articles, reviewing legal expense accounts. Yeah, minutes बेटा, या minutes का point भी add कर सकते हो, reading the minutes. Yes. Then this R point is for reviewing legal expense accounts. आप ledger scrutiny करते हो ना, आप लीगल एक्सपेंस वो लेजर निकालते हो, देन यू सी व्हाट आर द प्रोफेशनल फीस पेड टू लॉयर, अरे ये कहां से आया, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द लिटिगेशन एंड क्लेम. सो दैट इज फॉर आर रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स. एंड देन नेचुरली अगर एंटिटी ने एक एक्सटर्नल लॉयर रखा हुआ है, देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम दैट लॉयर. अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या क्या हो सकता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो ऐसे 505 का स्टोरी आज ही किया, सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. एंड देन ऐसे पॉइंट्स में ऑल द सेंसिटिव पॉइंट्स जो होते हैं वहां पे W तो होता ही है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दमाल वाला W नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर SA 580, that you give it to me in writing that you have disclosed all the litigation and claims and you have accounted those in the financial statements. So बहुत ही simple theory answer है about identifying litigation and claims, and there is nothing beyond this that can be asked for you, don't worry. All right, यहाँ पे बेटा मैंने ये दे दिए हैं, आज मैंने ऑलरेडी कराया है ये, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब when you are sending external confirmation to the lawyer, of course वो मैनेजमेंट के थ्रू जाता है, मैनेजमेंट अपने लेटर हेड पे भेजता है, only then that lawyer will reply, otherwise लॉयर का भी बहुत ये होता है ना confidentiality, so lawyer may not reply. So when you are sending the external confirmation to the lawyer via management, तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. Contents of direct communication with external legal counsel through a letter of specific inquiry. What can be the contents? वो लिखा है यहाँ. All right. So you can just go through it. क्या क्या contents? Naturally, I would want a list of litigation and claims. Then what could be the impact of that? Whether there are more litigation and claims involving the entity. Those are the contents. All right. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है that auditor wants to meet personally external legal counsel. External legal counsel का DP देख लिया, auditor likes it and he wants to meet. What are the examples of circumstances when auditor may seek a meeting with entities external legal counsel? Naturally, जब ऐसा लग रहा है that management is influencing external legal counsel and it is better to have a direct communication. ऐसा लग रहा है management has not given some details और सब writing में नहीं हो पाएगा. It is better to have a direct communication, meet the external legal counsel. So these are some 2 extra points जो आज तक एग्जाम में आए नहीं है, but if they want to ask they can ask. ये सिर्फ read once कैटेगरी में डाल दो, I mean just go through it once. Matter जब complex होता है, significant risk होता है, then I may feel that was I want to have a direct communication, I want to meet the external legal counsel. Okay.
Third part of SA 501. Third part of SA 501 is dealing with presentation and disclosure of segment information. तो आपको ये AS 17 या आपका Ind AS 108 से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन. They can ask you from that. Schedule 3 and stuff, they can mix it up and they can ask you. So do not, वो डर मत जाना एग्जाम में. If they ask you a question from AS 17 Ind AS 108, अरे ये तो FR है, इसमें कहाँ से आया? They can ask you accounts question या तो audit में सिर्फ इतने points हैं. That boss, जो अलग अलग segments disclose किए होते हैं in the financial statements, naturally what in auditor what is going to do? I'm going to first obtain understanding कि segment को disclose करने का criteria क्या है, based upon which criteria they are disclosing the segment. Whether that criteria, that method is acceptable or not of identifying the segments. जो आप AS में करते हो ना बेटा, वो यहाँ पे बोल देना कि ये सब चेक करना है. AS में जो लिखा है, that I need to check. As simple as that. And then I will perform analytical procedures. That is nothing but ratios and comparisons with the last year to understand that whether the presentation is proper or not. But ये usually exam में आज तक आया नहीं है, because segment information they cover it in your FR paper. So these are the three parts of SA 501. 501. Mostly मेरा notes is very clear, so ensure that you go through it, and if there is any problem, you can always meet me in the doubt solving section. We'll quickly go with the shortest essay now. That is SA 510. Initial audit engagement, verification of opening balances. मैं fast वहां पे जाता हूँ जहाँ पे हाँ Jan 21 में आया था segment information. हाँ मैडम, इसके तो यहाँ पे सब है ना, don't worry. All right. SA 510, initial audit engagement, verification of opening balances. मैं fast वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे notes are very clear. तो मैंने जो writing में already काफी मेहनत कर ली है. So I'm just going fast only where the notes are very clear about the content. Okay. SA 510, initial audit engagement, verification of opening balances. Now when I say initial audit engagement, first of all ये ऐसे के लिए दो condition है for 510. That this essay is applicable only where we are talking about initial audit engagement. Initial audit engagement यानी two things. Of course, आपका client के साथ first year है. That means there can be two reasons. First, either there is a change of auditor, या तो the financial statements of the entity are being audited for the first time. That means previously financial statements were not audited. For example, partnership firm है 7 years तक छोटा business था, so they did not audit it. It was not required also. Now their business has grown. So in the 8th year of the accounts, they're actually auditing the financial statements for the first time. So आपको appoint किया. That's what it is. So उनका 8th year है, but आपका तो initial audit engagement है. So please be careful. An engagement in which either financial statements for the prior period were not audited. That means financial statements are being audited for the first time. And I also gave the example. Partnership firm, 8th year of accounts. ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना है तो it's okay. Financial statements are being audited for the first time. क्या तो financial statements for the prior period were audited by ये थोड़ा जानवर जैसा नाम दिया predecessor auditor, that is previous auditor. That means there is a change of auditors. Initial audit engagement. आप मानोगे नहीं, मैंने फास्ट ट्रैक कोर्स में ओपनिंग बैलेंस का भी डेफिनेशन दिया. अब आप बोलोगे अरे ओपनिंग बैलेंस का डेफिनेशन देता है कोई फास्ट ट्रैक कोर्स में. But you need to understand that opening balance is not just previous year closing balances. No. Opening balance, previous year का जो contingent liability होता है ना, that can materialize in current year. जो previous year में contingencies था, that is also considered as opening balance for current year. Understood this? Because उसकी वजह से current year में provision हो सकता है. So opening ये तो सबको पता है, prior period closing balances. But क्या आपको ये पता था that matters that require disclosure at the beginning of the period, that means the previous year contingencies, are also considered as opening balances. Be careful for MCQs. Okay. 510 में objective. What is the purpose of auditor in 510? This is important because ये आपको 510 के हर एक आंसर में लिखना है. 510 में ऑडिटर ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट करेगा. ओनली ओपनिंग बैलेंस की बात चल रही है फॉर 510. बट सी इट इज माय इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, यानी प्रीवियस ईयर का मैंने ऑडिट नहीं किया. सो ऑफ कोर्स आई विल नॉट स्टार्ट फुल प्रीवियस ईयर ऑडिट बिकॉज ओपनिंग बैलेंसेस विल प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस. आई एम जस्ट वरीड अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस कि भाई इसकी वजह से एटलीस्ट करंट ईयर में मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. तो आई नीड टू ऑब्टेन 500 सीरीज में ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये चलता रहेगा.
I need to obtain sufficient and appropriate audit evidence about whether opening balances contain misstatements that materially affect current period financial statements. ये बायट कर लो boss. That whether opening balance में misstatement है which can materially affect current period financial statements, and naturally since वो balances है तो balances में होता है valuation. अब जब valuation होता है then I will be worried about accounting policies. So about whether accounting policies पे ना बेटा हमेशा तीन चीजों का टेंशन होता है. ACC. Whenever you are writing any point about accounting policy, we are worried about appropriateness. ये देखो appropriateness. We are worried about कोई भी accounting policy whether it has been consistently applied, and then if there are any changes, whether it is proper, accounted, presented, disclosed. जब भी आप accounts की बात करते हो ना तो हमेशा ये तो लगा ही देने का. देखो मैंने सब जगह लिखा ही है AFRF, that means as per applicable financial reporting framework. ऐसा मत लिखो properly लिखो. It should be in accordance with AFRF. All right, so applicable financial reporting framework. So these are the objectives of 510 which you need to keep in mind. Okay. एक थियरी क्वेश्चन काफी बार आया है ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए. फाइनल से लेवल पे इफ यू आर लकी यू मे गेट दिस क्वेश्चन 1 or 2 times it has been asked. What are the audit procedures for verifying opening balances? वैसे तो कॉमन सेंस से पता है ये सबको ब्रॉड फॉरवर्ड अगर चेक करना है स्टफ. ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करने के लिए और क्या प्रोसीजर हो सकता है. बट देखो आई हैव स्टिल गिवन अ कोड वर्ड टू यू. रीड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट पॉलिसी. वन मोर टाइम. रीड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट पॉलिसी. सो रीड द previous year financial statements if any or previous auditors report. Brought forward check करना है. Understood this? अच्छा previous year balance जो balance is अगर current year में changes हो रहे तो it could be prior period items which can be reflected in the financial statement. Then one point on accounting policy. Accounting policy में अभी मैंने बताया you are supposed to write points on ACC. You write this much you get full marks. देखो. So these are the audit procedures for verifying opening balances. These are very easy marks. ऐसे question आते हैं. Then you need to thank your parents for the timing and the luck also. Okay. Then हो रहे सब लोग. Listen. We need to 510 में एक बहुत important point है. That boss. We are worried about previous auditors report, predecessor auditors report, previous auditors report. When we are worried about predecessor auditors report, other previous year financial statements are audited. So in that case, we are worried about previous auditors report. तो previous auditors report आपको दो जगह पे support कर सकते हैं. Students को normally यही वाला part पता होता है. Students don't write this part. First of all, previous auditors report will help me when I am performing risk assessment procedure, which I discussed yesterday. Risk assessment procedure, starting of the audit. If previous audit report में modified opinion है, then naturally it will help me in identifying risk of material misstatement, because what went wrong last year can also go wrong this year. So previous auditors report helps me while performing risk assessment procedure. Then ये तो common sense ये वाला part. It also helps me while forming audit conclusions. अगर year end होते अगर previous audit report में modified opinion था, if there is a modified opinion in previous auditors report, predecessor auditors report, year end hote whether that matter has been resolved or the matter remains unresolved. If the matter is resolved, then fine, man. But if the matter remains unresolved in the current year financial statements, unresolved, okay, and if it also remains relevant and material, because materiality can change, it is subjective, relative. तो अगर unresolved है और current year के लिए भी वो material है तो naturally I will also modify the opinion. Which opinion, that will also depend कि previous auditor ने कौन सा opinion. If the matter is resolved नहीं बेटा तो आपको current year report में उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं. If the matter is resolved, because audit reports are not for advertisements. Okay, so it's fine. If the matter is resolved, we don't write it in the current year report. ये बेटा ये next page पे कि boss, what can be various possible conclusions? What can be various possible conclusions when it comes to SA 510 ऑडिट ओपिनियन के बाद? बॉस मैंने आपको कल पहले सिंपली बता दिया था, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, in that case if it is not rectified तो qualified or adverse, but if evidence is not available तो qualified or disclaimed. आप देखो वही लिखा है. Quickly I'll give you 2 minutes, go through this.
580 फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी, बट जस्ट गो थ्रू दिस, टेल मी इसमें 1 2 3 4 कोई सिचुएशन आपको नहीं समझा तो चैट बॉक्स में लिखो। धनश्री नहीं, अल्टरनेट प्रोसीजर्स कहाँ है, कौन से केस में, कोई केस में यहाँ पे तो नहीं अल्टरनेट प्रोसीजर्स। 1 2 3 4, if you are not understanding any situation then tell me. Okay, Suraj Singh, third will also include emphasis of meta paragraph. Suraj Singh, I don't think you have attended yesterday's lecture. और आप अभी सुबह 7 बजे आए हो तो that means you're a very sincere student. Emphasis, अगर ACPD amount classification presentation disclosure अगर misstatement होता है ना तो आप emphasis of meta paragraph में you cannot go only. आप I think you are missing out emphasis of meta paragraph condition. Alright. अच्छा सर, सेकंड में एडवर्स होना चाहिए बस। ओपनिंग बैलेंस के अंदर, ओपनिंग बैलेंस में आपने कंक्लूड कर लिया दैट मिसस्टेटमेंट है और मटेरियली भी अफेक्ट कर रहा है, बट वेदर इट इज परवेसिव और नॉट कैसे पता चलेगा? सर बैलेंस शीट लिखा है, बैलेंस शीट, अरे बट वी कैन नॉट हैव अ क्लियर आइडिया विद दिस बिकॉज़ और कोई डिटेल्स है नहीं कि आपके पास अभी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। सो इसलिए यहाँ पे आपको मटेरियल पता चल रहा है बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज मटेरियल एंड परवेसिव और नॉट। सो दैट इज व्हाई क्वालिफाइड और एडवर्स, सब जगह वही लॉजिक है। अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई नहीं किया पर कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी, व्हाट इज द इंपैक्ट, वी डोंट नो। दैट इज व्हाई क्वालिफाइड और आप ऑडिट ओपिनियन और वो सब रिवाइज करते रहो, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। यस सूरज, वेरी गुड, यस कमिटेड दैट इज गोइंग टू रिवाइज इट अगेन, फाइन। So that is it for SA 510. We quickly start with this. SA 580 return representation. सबको पता है return representation, we take it in writing from the management. But आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? It is a written declaration which is given by the management to the auditor, by the management to the auditor. Okay. But आपको क्या क्या आ सकता है? Be careful about it. सबसे पहले तो return representation के definition में there is one line which you need to understand. ये सबको पता है. It is a written statement provided by the management, to the auditor. Either we want management to confirm certain matters, or we want management to give some supporting evidence. जैसे कि अभी suppose long term, short term investment का classification and stuff, उसके लिए भी मैं ask them to give it. ये क्या है? This line. I will spend 1 minute on this line. Written representation in this context do not include financial statements, assertions, therein or supporting books and records. अगर management आपको बोलता है that boss हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी ये सब लिख के दिया है, वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अरे एविडेंस तो है ना आपके पास, देन व्हाई डू यू वांट रिटन रिप्रेजेंटेशन? आपको सब कुछ ऑलरेडी तो लिख के दिया है। तो टेल देम कि भाई SA 580 में रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक अलग से रिटन स्टेटमेंट व्हिच वी विल आस्क यू टू गिव इट टू अस। Just because you have given financial statements, books of accounts, and some records, that does not mean that you will not give written representation. Tell them written representation, normal dictionary meaning है कि जब भी कोई कुछ लिख के देता है तो it is written representation, but as per SA 580 it is a separate written statement provided by the management to the auditor. So just because management has given us financial statement, books of accounts, even though वो भी उन्होंने लिखा है, but it does not qualify as a written representation as per SA 580. तो ये लाइन मैनेजमेंट को बताने के लिए that boss, just because आपने अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दिए, that does not mean that आप you will not give us a written separate written statement. All right, that is why this line is there. Okay, some basic points to remember for written representation. एक तो ये पॉइंट्स तो सबको आते हैं पर फिर भी मैंने फटाफट लिख दिया है that was written representation is just a supporting evidence. We cannot completely rely on written representation. सिर्फ एक written representation के basis पे we cannot say it is a sufficient and appropriate audit evidence. We have to perform our own planned procedures. So it is nothing but reliability of written representation. You know about this. Okay. ये थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प पे be careful.
form of return representation and content of return representation. Of course, return representation form की बात करूँ, has to be in writing. It is return representation. अच्छा, it has to be the letter format, which is given to the auditor by the management. Most importantly, it should be signed by a person with some good appropriate authority over the financial statements. Understood this? Who has the knowledge of the matters of the financial statements. So look at this representation letter addressed to the auditor. और एक important point जो आपको बोलना है, date. Return representation की जो date है, we will keep it as near as possible to the audit report date. देखो, during the course of audit पूरे साल में management के साथ discussion चलते रहते, but that full final return representation we take it at the end of the audit because वहाँ पे सारे matters finalize हो जाते हैं. What we want them to exactly give it is us in writing. वो electronic form नहीं चलता है, paper form ही होना चाहिए. It must be paper form. So for that, वो stamp sign करवाना, we keep it at the end of the audit. Okay. Return representation कितने period के लिए होना चाहिए? It should be for all the periods which are covered in the audit report. अब audit report एक साल का होता है, so for those period, for that period, you are going to take the return representation. All right. So be careful about this. Representation letter addressed to the auditor, electronic form not allowed. हाँ, mail पे discussion होते वो ठीक है, otherwise it is not allowed. Be careful about it. Return representation में क्या क्या लिखवाना है? What are the points to be written in that return representation? मैं एक formula देता हूँ. SA 580 plus other essays plus as required by the auditor. SA 580 plus other essays plus as required by the auditor. So SA 580 ये 3 points compulsory SA 580 बोलता है, this so you have to take it in writing. Then जब अभी SA 501 देखा, we saw that वहां पे भी कुछ points लिखे थे that take it in writing, take it in writing. So when we keep on doing other essays, ऐसा sequence क्यों है? Because अब मैं आगे के essays जो कराऊंगा, वो essays में बार-बार ये point आता जाएगा return representation. So that is why I'm teaching this essay writing. So there will be more essays which will tell you about return representation, so as required by other essays. But इसका list कोई restrictive list नहीं है. If auditor wants for more matters, he can take it. अब SA 580 कौन सी चीजों के लिए बोलता है? Be careful. Return representation में बोलता हूँ ना कि हम end में लेते हैं because we want management to give it to us in writing. ये words नहीं बोलना है. It has fulfilled its responsibility. देखो, letter of engagement जो कल discuss किया उस पर responsibility decide होती है. But return representation is that you give it to me in writing that जो decide हुआ था वो आपने fulfill किया है, निभाया है. You have fulfilled the responsibilities. It has fulfilled its responsibilities. For what? अब सोचो letter of engagement में क्या क्या decide हुआ था. For that, there you have to give it in writing that ये सब आपने fulfill किया है. So अगर आप एक word याद रखो, fulfilled its responsibility, और जो management की responsibility वो लिखते जाओ. Fulfilled its responsibility for preparation and presentation of financial statements. You have fulfilled your responsibility of giving the data to the auditor. You have disclosed all the transactions and events that have occurred to the auditor. और क्या लिखाओगे? Okay. All right. So these are the content of return representation. So this is you need to be careful about it. They can ask you about this content. Okay. बाकी ये सब तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बॉस डेट पीरियड और कंटेंट के बारे में मैंने समझाते समझा दिया आपको कि बॉस नॉर्मली डेट हम लोग एंड ऑफ द ऑडिट का लगता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बीच में अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ओनली देन वी विल टेक अ सेपरेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट. आई हैव ऑलरेडी गिवन अबाउट दिस. देन ये वाला पॉइंट मुझे जरा बताना. ये बाकी आप ये पॉइंट्स रीड कर लो. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. आप लेक्चर के बाद रीड कर सकते हो, बट ये वाला पॉइंट मुझे बताना है. दिस कैन बी आस्क्ड एज अ केस स्टडी. लेट अस से अगर देयर इज अ चेंज ऑफ CFO CEO वगैरह एंड मैनेजमेंट बोलता है दैट बॉस, करंट मैनेजमेंट बोलता है दैट बॉस आई वाज नॉट प्रेजेंट व्हेन ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैपेंड. मैं तो अभी आया हूं, नया हूं, आई जस्ट केम राइट. देन इन दैट केस management still has to give return representation. We are not going to give them any discount. So be careful about it. Situations may arise when current management was not present during all periods referred to in the auditor's report. This fact does not reduce such person's responsibility for financial statement as a whole. The requirement for the auditor to request them return representation will still apply. So they cannot say that boss, we were not there, so we are not going to give return representation.
अच्छा, आपको ऐसा भी केस स्टडी आ सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेकर कि मैनेजमेंट ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ऐसा लिख के देता है, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज। पहले केस स्टडी सुन लो, ऐसा आ सकता है। एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, मतलब वो लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं बट दे आर यूजिंग दिस लाइन कि जितना हमें पता है और जितनी इंफॉर्मेशन है, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, विल यू एक्सेप्ट सच अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? यस, वाई और एन में जवाब दो। मैनेजमेंट ऐसा लिख के देता है दैट बॉस, टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, विल यू एक्सेप्ट सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? That is why it is important to attend my lectures. बस stop. अब ये देखो, ये प्रोनाउंसमेंट्स, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में दिया हुआ है, ये पढ़ो। ये उज्जवल, मैं अभी तेरा यस का रिप्लाई नहीं लूंगा, यू हैव राइट, तूने पढ़ लिया होगा। So I hope you have understood this, that boss, even if management is using such language, but auditor का past experience is such that okay, management is ethical और आपको डेटा वगैरह सब मिला है और आपको कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है, in that case you can accept to accept such wording. Look at this, cancel नहीं किया, underline कर रहा था, to accept such wording if you are satisfied that these points are coming from people who are knowledgeable, ethical and stuff. Understood this? Look at this. Be careful about it. All right, so be very careful about it. SAFIT return representation में हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिटर शुड टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट with appropriate responsibilities for the financial statements and knowledge of the, अगर ऑडिटर satisfied नहीं है फैजल, तो we may say that boss ये लाइन नहीं चलेगा, इसलिए it has been left up to auditors judgment. But auditing pronouncement बोलता है कि ऐसा नहीं that you can't accept it. Okay. अच्छा, हम कहते हैं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी टेकन फ्रॉम मैनेजमेंट, बट कौन सा मैनेजमेंट? ऑफ कोर्स इट हैज अप्रोप्रिएट रिस्पांसिबिलिटी रेलेवेंट, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उनका कुछ अथॉरिटी है, वहां से लेंगे, उनसे लेंगे। तो इसको सिर्फ हम एलाबोरेट कर रहे हैं। वी हैव जस्ट गिवन डिफरेंट एग्जांपल्स कि कौन से लोग आर एलिजिबल फॉर साइनिंग ऑन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, तो वो तो बहुत क्लियर है दैट वी वांटेड फ्रॉम दोज रिस्पांसिबल हु आर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजुअली दैट इज व्हाई सीएफओ लेवल के पास से लिया जाता है। फिर वो बोला है कि भाई अगर छोटा एंटिटी है तो मैनेजमेंट, दो स्टार गवर्नेंस सब किसी एक के हाथ में होता है, सो वी कैन टेक इट फ्रॉम दैट पर्सन आल्सो। सो इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस डिस्कशन that from whom we can take written representation. So just go through that please. ये बहुत सिंपल है इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना मेरी नोट्स जहाँ पे बहुत क्लियर है, देयर आई विल नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन एवरी सिंगल लाइन, बिकॉज़ वो नोट्स बनाते वक्त जो मुझे एफर्ट डालना था वो मैंने डाल दिया है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। सो कुछ पॉइंट्स में आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफिंग, बिकॉज़ ये पॉइंट किसके रिलेटेड है, फिर आपको लेक्चर के बाद फास्ट उसको रीड कर देना है। ओके, काफी बार हम लोग जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट डिस्कस करते हैं ना, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, टेल मी ऐसे केस में क्या होगा? लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो हम डिस्कस करते हैं, इट वाज डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट, लेट अस से मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा गया, लेटर ऑफ एंगेजमेंट की बात कराओ जो कल डिस्कस किया, अब लेटर से मिस्टर वर्मा आ गए, बट अभी लेटर ऑफ एंगेजमेंट तो मिस्टर शर्मा के साथ डिस्कस हो गया था। नाउ नॉर्मली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सिर्फ इतना लिखवाते हैं दैट बॉस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, दैट बॉस आप सिर्फ लिख के दे दो कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट में जो जो डिसाइड हुआ था, यू हैव फुलफिल्ड दैट, यू हैव फुलफिल्ड दैट, सिर्फ इतना लिखवाते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बट इन दिस केस दिस इज एन एग्जांपल जहां पे हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में वापस अगेन we will ask them to write all the contents of letter of engagement. Understood? This is just an example. Look at this. Explain the circumstances where auditor may also ask management to reconfirm its acknowledgement and understanding of management's responsibilities as agreed in letter of engagement. Usually written representation में हम सिर्फ इतना लिखवाते हैं that whatever was agreed in letter of engagement तो सिर्फ लिख के दे दे that you have fulfilled those responsibilities, इतना लिख के दे दे बस। But these are the examples where we may again ask them that whatever was discussed in letter of engagement to reconfirm that you actually still believe that these are your responsibilities. So naturally when there is a change of management, या let us say business situations considerably change हो चुके हैं,
या रिकरिंग चेंज इन मैनेजमेंट, ओके, बिजनेस सिचुएशंस कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, या देयर आर बिग मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है दैट बॉस दिस नीड्स टू बी रिकन्फर्म्ड एंड स्टफ. लुक एट दिस, दोस हु साइंड आर नो लॉन्गर रेलेवेंट, या लेट अस से कि ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स बहुत पहले प्रिपेयर किए थे, ऐसा लग रहा है कि इट इज अ नीड टू एटलीस्ट रिकन्फर्म कि भाई सेम टर्म्स है, ओके, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई चेंजेस है. कल भी ऐसा सिमिलर डिस्कस किया था, व्हेनेवर देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, चेंजेस एंड स्टफ, तो ऐसी चीजें हो सकती है, या तो वी मे जस्ट सेंड देम अ रिवाइज्ड लेटर ऑफ एंगेजमेंट. तो ये कोई नया बात नहीं है, जस्ट दैट ऐसा कुछ आया तो डरना मत, समझना कि क्वेश्चन क्या है. अंडरस्टूड, ओके, ये बस खत्म ही हो रहा है, डोंट वरी. ये पैराग्राफ पढ़ो, इस ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या आपको कंपनी लॉ से कोई एग्जांपल याद आ रहा है व्हिच यू कैन राइट ओवर हियर? ये पैराग्राफ पढ़ के बताओ मेरे को, कंपनी लॉ से कोई एग्जांपल याद आ रहा है? Perfect summer, perfect. Yes, Anjali, very near. But summer is very perfect. DRS, director's responsibility. Yes, yes, perfect. DRS, Dhoni review system. Director's responsibility statement as per section 134 of Companies Act 2013. Perfect, perfect. Yes. Boss, director's responsibility statement अगर आप देखोगे कंपनी लॉ से सेक्शन 134, तो इन डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट लॉ ऑलरेडी मैनेजमेंट से काफी कुछ लिखवा रहा है. लॉ इज ऑलरेडी आस्किंग मैनेजमेंट दैट यू राइट दैट ऑल रिकॉर्ड्स आर एडिक्वेट, you write that going concern is appropriate, you write that internal controls have been implemented, you write that you have complied with laws and regulations, you write that accounting policies are appropriate. So many matters जो हम normally written representation में लिखवाते हैं वो यहाँ पे already covered है, and that is a written public statement which directors are addressing to public at large. तो ऐसी सिचुएशन में जब इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल करवा दिया है, then in that case do you really want a separate return representation? So it is left up to auditor's judgment, but what essay is saying that if already it is getting covered in DRS, then in that case you may not want a separate return representation. देखो ऑडिटर को लगता है कि भाई दिस इज इनफ, कि हम मुझे जो चाहिए था वो कवर हो गया है, relevant matters covered by such statement, ये देखो, need not be included in the representation letter. So be careful about it. All right, but still auditor has to evaluate, safety basis पे तो हम ले ही लेते हैं. Okay, now the last discussion, last part, we are on the last page. ये आप मेरे साथ साथ लिखोगे, अपने आप चार्ट बनता जाएगा. Let us say that auditor has requested management to provide written representations. Now there are two possibilities. अच्छा, ये लास्ट लाइन बेटा मैंने एक्सप्लेन किया कि बॉस लॉ एंड रेगुलेशन में जस्ट बिकॉज देयर इज सम स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि वी विल नॉट गिव यू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. सो इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर दिस एसे. इफ ऑडिटर स्टिल वांट्स इट, ही कैन टेक इट. अंडरस्टूड? ओके, नाउ एसए 580 में लास्ट पॉइंट, ऑडिटर हैज रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. चलो लिखते जाओ. Management provides return representation or management refuses to provide return representation. Okay, management provides return representation or management refuses to provide return representation. First we'll finish off this. Management refuses. If management refuses to provide return representation, so tell me auditor क्या करेगा फटाफट? what should be the next this thing? What will auditor do? अगर मैनेजमेंट ना बोल देता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, yes, Anjali says evaluate the reasons. Aneri Jain says alternate procedure. Tatvi says that whether well valid or not. Most of the discussions, most of the answers are wrong.
Ehsan correct, communicate with those charge governance. Suman straight away goes to modify opinion. Pratna says reevaluate integrity. Fine, fine. Everyone is on, most of them are on right track, but many initially went wrong. Okay, that's it, that's it. Thank you. Focus over here. Boss, listen. Normally, जब management data नहीं देता है ना, then we say evaluate the reasons, ask for reasons. Why you are not giving it? See, 1 or 2 lines, if they are not writing written representation, we can evaluate the reasons. But अगर पूरा written representation देने से ही ना बोल देते हैं, they are not giving written representation for extremely important matters. In that case, there cannot be any valid reason. फिर सबको पता चल गया that there is something wrong. That means they don't want to take the responsibility. That is why ये मैंने लिखवा रहा हूँ. अगर इतना simple होता तो मैंने print कर दिया होता. So if management refuses to provide written representation, in that case, straight away we will go to those charged with governance. Discuss the matter with those charged with governance. Understood this? Because if those charged with governance also refuses to provide written representation, we straight away go to those charged with governance. If those charged with governance also refuse to provide written representation, if TCWG also refuses to provide written representation, in that case मेरे पास और क्या ऑप्शन रह जाता है? What am I going to do? अब आप सोचना, मैं आपको बताता हूँ इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है. अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो नेचुरली, सी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज लाइक बैकबोन. मैं सबको बैकबोन दिखाते नहीं फिरता, बट अगर दिखता तो सबको मेरा चेहरा, एवरीवन लुक्स एट माय फेस. मैं बैकबोन सबको दिखाते तो नहीं फिरता, बट इफ बैकबोन इज नॉट देयर देन आई एम यूजलेस. आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट नेचुरली माय बॉडी विल नॉट वर्क इन बेस्ट. सो प्लीज अंडरस्टैंड वन, दैट इफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट देयर, तो आज तक मैनेजमेंट ने जो जो डेटा दिया, वी विल स्टार्ट हैविंग अ डाउट ओवर ऑल द एविडेंसेस. इसका ना चेन रिएक्शन आता है, चेन रिएक्शन. वी स्टार्ट हैविंग अ डाउट ओवर ऑल द एविडेंसेस, देन नेचुरली पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी पे डाउट आ जाता है. इफ दिस हैपेंस, देन नेचुरली पूरा का पूरा परवेसिव इफेक्ट आ जाता है. इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला तो इट इज जस्ट अ सपोर्टिंग एविडेंस, पर अगर नहीं मिला तो इट इज अ चेन रिएक्शन. एंड देयरफॉर बॉस, इफ यू डोंट गिव मी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो आज तक जितना एविडेंस मिला है सबके ऊपर से रिलायबिलिटी, आई एम गोइंग टू लूज द ट्रस्ट. देयरफॉर आई एम गोइंग टू मॉडिफाई ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड बॉस, दिस वन इज गोइंग टू बी डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन, बिकॉज मुझे एक ऐसा डेटा नहीं मिल रहा है which may not be important singly, but अगर ये नहीं मिला तो सबके ऊपर डाउट आ जाएगा. and that is why there will be a disclaimer of an opinion. All right, I have explained it now. अच्छा, withdraw from the engagement वगैरह यहाँ पे नहीं लिखते because we are already at the end of the audit. No written representation. So at the end of the audit, at the very end stage, we may not withdraw. Of course, fraud वगैरह वो सब मैं बोलता हूँ. Naturally, in this situation, we will have to, 2 point हमेशा याद रखना. We'll have to re-evaluate the reliability and integrity of management, because अब मुझे भरोसा नहीं रहेगा ना, तो मुझे वापस उनको re-evaluate करना पड़ेगा. That next year इनके साथ continue करूँ कि नहीं करूँ. This year तो now at the end of the audit, I will finish it off. Re-evaluate the reliability and integrity, honesty of management and those charged with governance, and consider risk of fraud in the financial statements. Of course, there could be a fraud in the financial statements. One more time, reevaluate reliability, integrity of management and those charged with governance, and consider risk of fraud in the financial statements. All right, okay. ये मैंने explain कर दिया. Doubts रहेगा किसी को तो doubt solving session पूछ लेना. I'm just finishing off the discussion now. If management provides written representation, so naturally written representation मिलने के बाद I'm not just going to sit there and be happy. I'm going to evaluate कि इसकी reliability है ना, it is proper ना. अच्छा, जो already मेरे पास evidences है कहीं उसके साथ it is not inconsistent. So if auditor develops doubt, अगर मुझे doubt आया over
reliability of return representation. If auditor develops doubt over reliability of return representation, किसी को लेट होता रहेगा तो मैं डिस्कशन खत्म कर देता हूँ. After the lecture I'll sit with you for 10 minutes. If auditor develops doubt over reliability of return representation, in that case वो मैनेजमेंट के साथ बैठेगा, दो स्टार अकाउंटेंट्स के साथ, he will try to solve the matters. But let us say सारी प्रोसीजर्स कर लेने के बाद, if auditor concludes that return representation is not reliable, if auditor concludes कि नहीं, this return representation is not reliable, अरे बॉस, या तो आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, या तो ऐसा दिया on which I can't rely. Both are same situations. If you are not giving me an evidence or giving me an evidence on which I can't rely, it is same situation. And therefore, over here also, I will modify opinion on financial statements, and it will be a disclaimer of an opinion. Same situation. Why disclaimer? Because you gave me a written representation on which I can't rely. Then naturally, if I can't rely on written representation, then I can't rely on all the evidences that I've got, and I cannot rely on the financial statements also. That is why disclaimer of an opinion. इसको screenshot लेना है, screenshot ले लो. Okay. That's it. Now with the discussions over here. That's it with the discussions over here. I will stop the recording of this session. After that, people can ask doubt, whatever it is.